I'm a bit sorry for joining a bit late for the lecture. Okay, okay. So I'm sorry again, joining a bit late for the lecture because there was a bit sound, and that's why I couldn't join in time. Okay, let's have the recap. What we have discussed here in the chapter already 2 days back, we have started with chemical kinetics. It's a very important chapter right from chemistry part one, that is physical chemistry, and we know very well. Here in the chapter, it has a very nice combination of theoretical part as well as part. And this chapter has three sections. In first section, we are dealing with very fundamental definitions or concepts related with chemical kinetics. Middle part, where we are dealing with core concept of this nuclear, that is chemical kinetics. And in third part, we are dealing with the supportive theories to the principles and core theory or core concept of this chemical kinetics. That is what we have seen. Till date, what we have discussed here in the chapter. So basically, we have seen here in the chapter that chemical kinetics is the chapter, as the name suggests. It is related with uh, rate of a chemical reaction, time factor, which is related with the chemical reaction. Because in organic chemistry, we are dealing with number of chemical reactions, but we never have discussed the time required for the completion of the reaction. And here, this is the chapter where we are going to deal with the time factor, that is nothing the rate of chemical reaction. Basically, in 11th standard, we have discussed one of the chapter called chemical equilibrium, where we have discussed chemical equilibrium, that is what is chemical equilibrium, what is physical equilibrium, what is rate of reaction, what is law of mass action. So those who are facing big difficulty with understanding this chapter, I will ask them, I will recommend them, just go through chemical equilibrium right from 11th standard. Some of the concepts are very useful here in this chemical kinetics. So we are seeing what is the rate of chemical reaction? We have seen definition that is change in concentration with the time is nothing but the rate of reaction, or in a given time is called the rate of chemical reaction. Now, thing is that in reaction, concentration of both reactant and product changes, and that's why we know it very well. Suppose we consider reaction A gives you B, the concentration of reactant decreases, concentration of product also increases, and that is what we have seen, the change in concentration of the reactant. Clear with this? Bit going further, bit going ahead, we have also seen that rate of reaction can be given in terms of reactant, rate of reaction can be given in terms of product. Whereas rate of reaction can be given in two different ways. Number one is average rate of reaction, and number two is nothing but the instantaneous rate of reaction. What is average rate of reaction? Average rate of reaction is nothing but the change in concentration with a given time period, or in a given time period is nothing but you can say average rate of reaction. What is instantaneous rate of reaction is the rate of reaction at very particular instant. So rate of any reaction at very particular instant is nothing but you can say average rate of reaction. That is also what we have seen here in this chapter. इस चैप्टर में आगे हम दोनों इक्वेशंस है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बट मेनली हम जो लिखेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज कभी भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ही जुड़े होते हैं और वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर हमने कल के लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हिच आर दिस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो कल हमने देखा there are three important factors which affect the rate of reaction. Number one is nothing but the rate law. Number two is nothing but you can say the rate constant, and number three is nothing but the order of reaction. Got it? So we need to have some recap of this one. So we are seeing factors affecting rate of reaction. So factors affecting the rate of reaction. So we are seeing that number one factor is nothing but you can say the rate law. Rate law. Number two factor is nothing but rate constant. Rate constant. And number third factor is nothing but you can say order of reaction. So these are the three factors which affect the rate of reaction. Factors affect the rate of reaction. Consider a reaction. Consider a reaction. हम reaction consider करें. A gives you B. तो being A is a reactant, B is a product. We have seen this. या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं. A plus B gives you a product. What are the product? That's what we can say. Yeah. Now, इसके अंदर ये तीन निकल देखे. How these three factors affect the rate of chemical reaction? Number one is rate law. Number two is rate constant. Number three is order of reaction. Applying law of mass action to this equation. Actually हमने कल देखा है, but मैं रिवाइज कर रहा था कि order of reaction हमें और डिटेल में डिस्कस करना है. कल हमने order of reaction डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा शॉर्ट नहीं किया. उसके और डिटेल इंफॉर्मेशन जरूरी है order of reaction. So applying law of mass action
to this equation, applying law of mass action to this equation, हमें क्या मिलता है? Rate of reaction is directly proportional to concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. ये equation हम लोगों को मिलता है. And this is according to 11th standard chemical equilibrium, जहाँ पे हमने discuss किया. तो हम जब इस रिएक्शन को लॉ ऑफ मास में अप्लाई करते हैं तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. So rate of that reaction is always directly proportional to concentration of reactant raised to suitable power x and y ऐसा उसके अंदर आ जाता है. So we got this equation. So इस equation की तरह हमने वो solve किया. Now think it. When we simplify this equation more, instead of this proportionality sign we can have equal to. So will be proportionality constant. So R is equal to K into concentration of A raised to X, concentration of B raised to Y. So we got this is the equation. ये equation number one. Now this equation is a mathematical equation. So first point is nothing but the rate law, which affect the rate of chemical reaction. हमने देखा है कि rate law is not actually law. It is a mathematical equation. Rate law is a mathematical equation which decides or which gives a true rate of chemical reaction in terms of molar concentration of reactant raised to suitable power. And this is nothing but the rate law. So this mathematical expression itself is called as a rate law. तो अगर आपको एग्जाम में रेट लॉ पूछा जाता है तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है कंसीडरिंग दिस रिएक्शन एंड देन उसका स्टेटमेंट लिखना है कि रेट लॉ इज नथिंग बट द मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच गिव्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज नथिंग बट द रेट लॉ. दैट्स ऑल. सेकंड फैक्टर इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट वेयर दिस k is nothing but the rate constant. This k is nothing but the rate constant. So when k is a rate constant of this reaction, rate constant of this reaction. So when we consider this reaction A plus B gives you product. इस रिएक्शन का K is rate constant. तो हर रिएक्शन के अंदर हर रेट लॉ के अंदर K आएगा और this K is nothing but the rate constant of the reaction. So this is the rate constant of the reaction. Simple सी बात है. Rate is directly proportional to K. So if K increases, rate of reaction also increases. If K decreases, rate of reaction also decreases. So rate of reaction depends upon the K. Now इस कुछ खासियत होती है. Rate law, rate constant के अंदर जो K है, rate constant is nothing but the K. इस K की खासियत होती है. Rate of reaction depends upon the K, but K is independent of temperature. देखिए, K is independent of the temperature. Rate depends upon the K, but K is not affected by the temperature. Normally, there are some of the reaction in which temperature makes the big difference. The rate of reaction depends upon the temperature, but K is independent of the temperature. K doesn't depend upon the temperature. Temperature चाहे लो हो ज़्यादा हो, whatever is that. तो हर रिएक्शन का K अपना स्पेसिफिक रहेगा, परफेक्ट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो हर रिएक्शन का अपना होता है. Sco because it is a rate constant और वो particular reaction का particular ही रहेगा, but it is independent of the temperature. So K is independent of the temperature. बाकी rate of reaction depends upon the temperature, but K is independent of the temperature. ये उसका एक important बात है rate constant. Clear? और rate constant को define कैसे करेंगे हम लोग? तो हमने कल देखा कि when we take this concentration constant, देखिए अब यहाँ पे discuss करते हैं हम लोग here. So that is you can say rate is equal to K into concentration A raised to X, concentration B raised to Y. If concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि concentration of A is equal to B and which is equal to 1, that is unit molar concentration of this taken. Then 1 raised to any power comes to 1. 1 raised to any power comes to 1. So that's why R becomes equal to K. ये हमने कल देखा हुआ है. So that's why R is equal to K. So in this sense we can say R is equal to K. यहाँ पे K मतलब रेट कांस्टेंट डिफाइन होता है. सो क्या डिफाइन होता है रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन होता है, दैट इज रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द concentrations of reactants are unity. Concentration of reactants are unity. So rate of the reaction when molar concentration of reactants are unity is nothing but the rate constant. तो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ पे मिलता है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी यहाँ पे मिलता है. दोनों चीजें देखिए, आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो एग्जाम में दोनों तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. नंबर वन, दैट इज यू कैन से मैथमेटिकल प्रूफ एंड एट द सेम टाइम थ्योरेटिकल डेफिनेशन. तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैथमेटिकल प्रूफ से ही प्रूव होता है. सो मैथमेटिकल प्रूफ जैसा है वैसा उसका डेफिनेशन है, जैसा डेफिनेशन है वैसा उसका मैथमेटिकल प्रूफ है. सो इन दैट सेंस यू कैन से rate of a chemical reaction is rate of reaction when the molar concentration of reactants are unity is nothing but the rate constant, and this rate constant affect the rate of reaction. That is also what we are seeing here in this one. This is the second, and third factor is nothing but the order of reaction. So we are here with third factor. So third factor is order of reaction.
सो हमने ये देखा कि इस रिएक्शन के अंदर जो R मिल रहा है, R is equal to K concentration A raised to X concentration B raised to Y. Now, this order of this reaction can be given by two different ways. देखिए इस रिएक्शन के अंदर these are the reactant और reactant दो reactant है. So order of reaction can be given in terms of reactant and order of reaction can be given as an overall order of reaction. So देखिए कि पहला आता है कि order of reaction in terms of A, reactant कितने दो है ना, A and B है, A and B. The order of reaction in terms of A is exponent of A in a rate law. This is nothing but the rate law. और इस rate law के अंदर A का जो exponent होता है वही A का order होता है, A के sense में order होता है. तो A का exponent है X है, and that's the order of reaction in terms of A must be X. जो भी exponent होगा वही order होता है in terms of A. Then second होगा order of reaction in terms of B is nothing but the exponent of B. तो B का exponent कौन है? Y. So Y is the order. So ये पहला तरीका है, first तरीका, जिसे हम कह सकते हैं कि order of reaction can be given in terms of reactant. Reactant A, reactant B. So ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे confuse होते हैं order of reaction में. किसी भी reaction का order दो तरीके से दिया जा सकता है. Number one में order of reaction in terms of any one of the reactant or any reactant. और number two, overall order of reaction. ओवरऑल ऑर्डर रेट. ये किस तरीके से ना कि आप हम 12th साइंस कर रहे हैं और 12th साइंस में आप हर सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं. ओवरऑल परसेंटेज कितने आए, जो भी आएंगे आपके 80%, 90%, 85%, ये आपका ओवरऑल परसेंटेज है. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने हैं, तो फिजिक्स के अलग होंगे, केमिस्ट्री का अलग आएंगे, मैथ्स के अलग आएंगे, बायो के अलग आएंगे, लाइक दैट. तो उसी तरीके से इसके अंदर है ओवरऑल ऑर्डर एज लाइक परसेंटेज. तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या आता है वो अलग बात है. और रिएक्शंस के अंदर जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, हर रिएक्टेंट के सेंस में रिएक्शन का ऑर्डर दिया जाता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मार्क के साथ. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए इज एक्सपोनेंट ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी इज एक्सपोनेंट ऑफ बी. अगर तीसरा रहता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी मस्ट बी सी का पावर एक्सपोनेंट जो भी रहेगा वो, लाइक दैट. और दूसरा जो तरीका है दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, overall order of reaction is nothing but x plus y. So this is what we can say. This is the overall order of reaction. So overall order of reaction is always the sum total of exponent in the rate law. Sum total of exponent in the rate law is called the overall order of reaction. That is what we can say. ये हमारे सामने आता है. So this is overall order. तो हमने कल शायद ये पूरा टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर कुछ बारीकी की चीजें जो हमें थोड़ा डिस्कस करना जरूरी, जो हमने कल डिस्कस नहीं किए थे, राइट. सो वो अभी डिस्कस करना. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए. Otherwise, I will directly move for the next concept, next topic what we have discussed here in the chapter. Clear with this? So, is there any doubt to anyone? क्योंकि ये हमने कल ही डिस्कस किया था, इसके अंदर कुछ नई बात है नहीं. So these are the topic what we have actually discussed in last lecture. But order of reaction we have to discuss in detail or bit more. We have discussed the order of reaction. So order of reaction के बारे में कुछ बातें आती, कुछ examples आते हैं. Okay. सबसे पहली बात है, there are some important points regarding order of reaction. So number one, order of reaction is purely experimental quantity. Order of reaction is purely experimental quantity. मतलब no one can predict order of reaction theoretically. It has to be experimentally determined. किसी भी reaction का order experiment करके ही पता करना पड़ता है. Theoretically कभी नहीं बताया जा सकता order of reaction. So that's why order of reaction is purely experimental quantity. हर reaction का order experimentally determine करना पड़ता है. Number one. Number two. Order of reaction की अगर बात करेंगे तो order of reaction जो है that depends upon experimental conditions. मतलब that depends upon experimental conditions. Order of reaction depends upon temperature. Order of reaction depends upon concentrations. There are many factors. So that's why order of reaction depends upon the experimental conditions. Experimental conditions क्या है, उसके ऊपर order of reaction depend करता है. Next, order of reaction can be zero. Order of reaction can be whole numbers. Or order of reaction can be fractional. मतलब order of reaction can be any. Order of reaction can be any. कुछ reaction का order zero भी हो सकता है. कुछ reaction का order whole numbers में हो सकता है. कुछ reaction का order fraction में भी हो सकता है. Like that. So
There are many examples we can find it out. So let's have an example. We can have one of the example. Example H2O2. Twice H2O2 decompose to produce twice H2O plus O2. This is the reaction. अब इस रिएक्शन में ये तो प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है. तो ऑर्डर ऑफ रेट क्या होगा इस रिएक्शन का? Rate of reaction is directly proportional to concentration of H2O2 raised to X. Raised to X. अभी मैंने X क्यों लिखा है यहाँ पे? Because X has to be experimentally determined. That is the order of reaction. इसके अंदर रिएक्टेंट एक ही एक है. अब आप बोलेंगे यहाँ पे दो है. ये दो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स. इट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो दो पावर पे नहीं जाएगा. हम 11 में जो रिएक्शन देखे थे उसके अंदर ये 2 यहाँ पे पावर पे चला जाता है. अभी हम और डिटेल में माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं. So this 2 indicates the number of moles that never goes to here. Coincidentally, sometime it may have here, but that has to be experimentally determined. हम बता नहीं सकते theoretically 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, whatever that. That has to be experimentally determined. So R is directly proportional to concentration of H2O2 raised to X, and X is being calculated for this reaction. H2O2 के लिए निकाला गया है, and we found that this X is equal to 1. अब ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके दिया है, तो लर्न करके रखना पड़ेगा कि H2O2 का ऑर्डर 1 है X. तो ये रिएक्शन क्या रहेगा फिर? R is equal to K concentration of H2O2 raised to 1. लिखने की जरूरत नहीं. 1 is 1. तो लिखने की जरूरत नहीं. इस रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है, तो इसमें ऑर्डर दो तरीके से आएगा. एक आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2O2 एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक ही रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2O2 is 1 and order of reaction, overall order of reaction is also 1, क्योंकि there is only one reactant. And that's why oral order is also 1 and in terms of reactant is also 1. So we got this one. So here इसका जो exponent है वो 1 है and that's why order of reaction is 1 and this has been experimentally determined. तो ये examples book के अंदर है, हमें learn करने पड़ेंगे. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, सीधा learn करने पड़ता है. ठीक है? Then next example you can say here NO2 CO2 gives you NO plus CO2 gives you NO2 plus CO as a reaction. ये second example. Example second. अब देखिए NO reaction CO produces NO2 and CO. ऐसा हम लोगों को इसके अंदर मिल जाता है. Now when it has been rate has been described, R is directly proportional to concentration of NO and concentration of CO2. So this is raised to 1 and this is raised to 3. So therefore R is equal to K concentration of NO raised to 1 and concentration of CO2 raised to 0. इस रिएक्शन के अंदर आप डिस्कस करते हो. So आप देखिएगा NO के सेंस में दो रिएक्टेंट है, NO and CO2 ये दो रिएक्टेंट है. So order of reaction in terms of NO is 1 and order of reaction in terms is 0. CO2 is 0. इसका मतलब है इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर 1 रहेगा और ऑर्डर ऑफ इन टर्म्स ऑफ CO2 क्या रहेगा? 0 रहेगा. So reaction का order 0 भी होता है, 0 भी होता है. Even there are many photochemical reactions in which order of reaction is 0. Photochemical reaction चाहे तो अपने addition of chlorine to CH4 आपने देखा, that is a photochemical reaction in presence of UV. So उस reaction में भी order of reaction 0 होता है. So इसका मतलब ये है कि order of reaction can be 0. 0 का मतलब ये है that rate of reaction doesn't depend upon the exponents, doesn't depend upon the order. So that is 0. So उसके ऊपर depend नहीं करेगा, जो factor वो रहेगा. Order of reaction 0. So order of reaction can be 0. तीसरा एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा आपको. That is you can say CH3CHO gives you CH4 plus CO as a reactant. So this is acetaldehyde. शायद ये कंपाउंड आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये कंपाउंड अच्छी तरह देखा हुआ है. This is acetaldehyde. Acetaldehyde decompose to produce methane and carbon monoxide. इस रिएक्शन का rate is equal to K concentration of CH3CHO raised to 3/2. ऐसा है 3/2. So this is fractional again. 3/2 is a fractional. So here we can say order can be a fractional. So there are many examples and these examples are given in book. We have to learn these examples. This is not a theoretical part. It is experimentally determined. So acetaldehyde का जो decomposition है, this follows 3/2 order. So order can be fractional. This is what we can say regarding the order. So all of you clear with this? So order of reaction के बारे में क्या लिखेंगे? Order of reaction होता क्या? Order of reaction is nothing but the sum total of exponent x plus y. जो हमने यहाँ पे. Order of reaction is the sum total of exponent in a rate law. In a rate law, we are discussing factors affecting rate of reaction, and there are three factors. अभी erase कर दी मैंने. 3 factors. Number 1 is rate law.
number 2 is rate constant, and number 3 is order of reaction. तीनों factor rate of reaction affect करते हैं, और तीनों factor explain करने के लिए हमें reaction consider करना पड़ेगा और rate law लिखना पड़ेगा. हम जब तक नहीं लिखते, जब तक हम rate law नहीं लिखते, तब तक हम लोग ना rate constant निकाल सकते हैं, ना हम लोग order निकाल सकते हैं. तो ये प्री कंडीशन है, ये जरूरी कंडीशन है कि हमें अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू हैव अ रेट लॉ. हर रिएक्शन को रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और जब हम रेट लॉ लिखेंगे तभी हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर पाएंगे. समझ रहे हैं आप लोग? सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम टोटल ऑफ एक्सपोनेंट इन अ रेट लॉ, and that is nothing but the order of reaction. Order of reaction can be given in two ways. Number one, there is order of reaction in terms of reactant and overall order of reaction. And order of reaction के बारे में these are the important points. It is a purely experimental quantity. बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि this is a purely experimental quantity. Order of reaction depends upon the experimental conditions, and order can be zero, can be whole numbers, or can be fractional. So this is regarding you can say order of reaction. So that is what we can say. So this is what we are seeing here regarding the order of reaction. So that's clear. With these examples, there are few more examples are given in your book or maybe in some reference books. Go through all these reference examples. It will help you to recall this chapter topic well. With this, let's go to next topic. There is nothing but the molecularity. So next topic is molecularity. Molecularity. Okay, so this is a new topic related with this chemical kinetics, molecularity, and this topic need to be discussed well. The reason behind that, we have to understand what is order of reaction and what is this molecularity. कई बार हम confuse होते हैं कि हम molecularity को order समझते हैं, order को molecularity समझते हैं. Coincidentally, it may happen that order of reaction may be equal to molecularity, or molecularity may be equal to order of reaction. But they are not similar. They are totally different quantities. So concept has to be clear. So what is molecularity and what is order of reaction? Clear? So let's move to this now. Molecularity. Okay. Let's have an example. You can say CaCO3. CaCO3 gives you CaO plus CO2. ये पहला रिएक्शन है. दूसरा रिएक्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ. ठीक है, दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लेता हूँ. That is, you can say H2 plus I2 gives you twice HI. Yeah. तीसरा रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे N2 plus thrice H2 gives you twice NH3. Okay. ऐसे कई सारे रिएक्शन लिए जा सकते हैं. अब देखिए, ये तीनों एग्जांपल आपके सामने हैं, और तीनों एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करना है दैट इज यू कैन से मोलेक्युलर. इवन अभी हमने जो एग्जांपल देखे थे वो भी लेते हैं हम लोग. That is, you can say H2O2, twice H2O2 gives you twice H2O plus O2. ये भी एग्जांपल जो हमने अभी देखा था. या फिर ये भी लेते हैं, हमने देखा था that is CH3CHO gives you CH4 plus CO. ये एग्जांपल है, अभी लिए थे ना हमने. ये दो एग्जांपल लिए थे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, उसी को लिया हमने. What is this molecular? Molecularity is the number of molecules of reactant involved in the chemical reaction is nothing but the molecularity. So number of molecules of all reactants involved in a chemical reaction is called as the molecularity of that reaction. Number of molecules of all reactants. So take example this one. इस reaction में arrow किस तरफ ये reactant है and these are the products. So ये reactant है calcium carbonate और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और हम अच्छी तरह जानते हैं आगे का नंबर हमेशा क्या बताता है, number of moles बताता है. उसे हम लोग molecule में convert कर सकते हैं. So 1 mole मतलब हम 1 molecule कह सकते हैं. So अगर 1 mole इसका 1 mole पैदा करता है, इसका 1 mole पैदा करता है, तो इसका एक molecule, इसका एक molecule बनाएगा, इसका एक molecule बनाएगा. In that sense, we can convert 1 mole into molecule, 1 molecule. So इसके आगे कुछ नहीं तो 1. So we can say एक ही reactant है, एक ही molecule है, and that's why इस reaction का molecularity 1 है, and that's why it is called a unimolecular reaction. See, this is called a unimolecular reaction. Why unimolecular is only 1. Only one molecule of reactant is involved. Only one molecule of reactant is involved. That's why this is unimolecular reactions. Come to this one. इसमें देखिए, इसके आगे 1, तो 1 mole of H2, यहाँ पे 1 mole of I2. कुल मिला के 1 plus 1 कितना होगा? You can have this 2. So this is a bimolecular reaction. Bimolecular reaction. This is bimolecular reaction. So simple. So this is called, you can say, bimolecular reaction.
बिकॉज हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं. तो 1 molecule of hydrogen, 1 molecule of iodine will make it 2 molecules. So this is a bimolecular reaction. अब देखिए हमारा डेफिनेशन मॉलिक्युलरिटी ये कहता है number of molecules of all reactant. इसका 1 molecule, इसका 1 molecule. That must be a bimolecular reaction. Here इसका 1 molecule, इसके 3 molecule. कुल मिला के क्या होंगे 4. So this is called as poly में आ सकता है या फिर quadra में आ सकता है like that. So quadromolecular reaction you can say. So that is you can say like this. This is quadromolecular because there are 4 molecules. यहाँ पे देखते हैं 2 molecules. Again it is bimolecular reaction. यहाँ पे 1 molecule. That is you can say bimolecular reaction. So based on how much molecules of all reactant involved in a chemical reaction, we can classify them. Unimolecular reactions for 1 molecule, bimolecular reactions for 2 molecule, trimolecular reactions for 3 1, and quadromolecules for 4, then polymolecular for 5 or more than that. Like that. ऐसा कह सकते हैं हम लोग. So polymolecular reaction. Reactions it can have like this one. This is the concept called as molecularity of the reaction. So molecularity is actual number of molecules of all reactant involved in a chemical reaction called as molecularity. Called as molecularity. So hope so कि molecularity concept is very clear. Now we will have to differentiate between order of reaction and molecularity of the reaction. So ये जरूरी है ताकि हम समझे इस बात को. आपके बुक के अंदर उसका पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन दिया है, तो आप यू कैन गो थ्रू योर बुक लाइक दैट, या थोड़े से पॉइंट में यहाँ पे दे सकता हूँ उसके बारे में. सपोज दिस इज यू कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज यू कैन से मॉलिक्यूलरिटी. ओके, उनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन देते हैं. सो सेकंड कॉलम गिव्स द मॉलिक्यूलरिटी and this column gives the order of reaction. So how we are going to differentiate between order and molecularity of reaction, that is very important. So clear with this? So let's come to this order of reaction and this molecularity of the reaction. That is what we're discussing. So अभी हमने देखा order of reaction का definition हमने देखा था. क्या देखा order of reaction? Order of reaction के अंदर सबसे पहला पॉइंट देखा, it is purely experimental quantity. So order of reaction is purely experimental quantity. Purely experimental quantity. मतलब theoretically कोई कुछ नहीं बता सकता. This is purely experimental quantity. And when I put out this is purely theoretical quantity. This is purely theoretical quantity. कैसे theoretical? अगर किसी को भी इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाता है, दिखता है, तो उसके आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर किसके कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है. Just by knowing a balanced chemical equation, we can tell the molecularity of the reaction. हम रिएक्शन का molecularity बता सकते हैं, समझ रहे हैं आप? So we can tell the molecularity of the reaction. Here, order is purely experimental quantity. Theoretically कोई नहीं बता सकता. So molecularity is theoretical quantity, order of reaction is experimental quantity. दूसरा, okay, order can be zero, can be whole numbers, or order can be fractional. Order के बारे में तीन चीजें, order के बारे में तीन चीजें. किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है, अभी हमने देखा. Order can be zero, order can be whole numbers 1 2 3 4, or orders can be fractional 3 by 2. Order ये हो सकता है. Now let's come to this molecules. Molecularity. क्या molecularity जीरो हो सकता है? whole number हो सकता है, fractional हो सकता है, लेकिन molecularity जीरो नहीं हो सकता. आप देखिए ना, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? Zero molecules of hydrogen reacts with 1 molecule iodine to produce HI. Zero molecules of hydrogen मतलब no molecule. No molecule मतलब कोई reaction possible है ही नहीं. Reactant है ही नहीं वहाँ पे. So in that sense, molecularity में zero molecularity हो नहीं सकती. Molecularity zero नहीं होगी. कुछ एक हो सकती है, दो हो सकती है, even fractional हो सकती है molecularity, but zero नहीं होगी. So in that sense, you can say this is also very important difference. The order can be zero, molecularity never be as zero. Third point, that is you can say order of reaction depends upon conditions. That is experimental conditions. Experimental conditions, and it is independent of experimental conditions. Independent of experimental conditions. Independent of experimental conditions. इसका मतलब ठीक है ना? जैसा हमने बताया कि order of reaction depends upon experimental condition. Temperature बदला, concentration बदले, तो order बदल सकता है. Order में change हो सकता है. But molecularity में change नहीं होगा. Molecularity में change नहीं होगा. Molecularity इतना रहेगा. अभी ये रिएक्शन देखो, चाहे हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखे, प्रेशर बढ़ाए, कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन रिएक्शन आयोडीन टू प्रोड्यूस एच, ऐसा ही रिएक्शन रहेगा. ओके, सो इसमें बदलाव आने की चांसेस बहुत कम है. थ्योरेटिकली बदलाव आने की चांसेस बहुत कम है. सो इन दैट सेंस, yes, is there any doubt to anyone?
Yes, please. Okay. So in that sense, you can say, yeah, order depends upon experimental conditions. Molecularity doesn't depend upon experimental condition. That remains similar. So these are the points of differentiation between them. Sometime it may happen that coincidentally, order can be equal to molecularity can be equal to order, but they are totally different concepts. सबसे पहले ये बात है, order is experimental quantity, molecularity is a completely theoretical quantity. That is very important. बाकी rest तो है ही है उसके. Clear with this? That is what we can say. Now, going ahead, we have to discuss molecularity more. Molecularity हमें discuss करना है. ये हमने definition तो देखा molecularity. क्या है molecularity? We have seen that. Molecularity is number of molecules of all reactant taking part in the chemical reaction is called as molecularity. Okay. Now, क्या हम लोग हर रिएक्शन का molecularity निकाल सकते हैं? क्या हम हर रिएक्शन का molecularity निकाल सकते हैं? तो 100% not. सारे रिएक्शन का molecularity हम लोग नहीं निकाल सकते. सारी इसका molecularity नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते हम लोग? हम देखिएगा. एक रिएक्शन ऐसा है, NO2Cl2 decompose to produce NO2 plus Cl ऐसा रिएक्शन. अभी this is the reaction which occurs in a single step. यही रिएक्शन अगर हम दो स्टेप में देखते हैं तो पहला स्टेप ऐसा है, that is NO2Cl2 gives you NO2Cl plus Cl2 और सेकंड स्टेप में आता है NO2Cl plus Cl gives you NO2 plus Cl2 and ओवरऑल अगर देखते हैं हम लोग ये रिएक्शन ओवरऑल तो ये आएगा NO2Cl2 gives you NO2 plus Cl2 ऐसा मिलेगा. यहाँ पे Cl है, सॉरी यहाँ पे Cl. एग्जांपल है. अभी देखिए NO2Cl2 एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है टू प्रोड्यूस NO2Cl2. ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हमने देखा है. बट अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो दिस रिएक्शन occurs in टू स्टेजेस. ये दो स्टेज में होता है रिएक्शन. पहले स्टेज में NO2Cl2 में NO2Cl तैयार होता है, ओनली Cl ब्रेकडाउन होता है. जबकि इसके अंदर दो Cl है, उसमें से एक Cl ब्रेकडाउन होता है, एक किसी के साथ रहता है. और ये जो NO2Cl है यहाँ पे आ जाता है, जो रिएक्ट होता है ये ब्रेकडाउन Cl के साथ, और ये Cl आता रहता है NO2Cl2 होता है. सो दिस रिएक्शन occurs in टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होता है. नाउ इस रिएक्शन के अंदर NO2Cl यहाँ पे भी अपीयर होता है और NO2Cl यहाँ पर भी अपीयर होता है. NO2Cl दो जगह आता है. तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगा? We can't calculate molecularity of such a reaction. ऐसे रिएक्शन का molecularity हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. The reason behind that, we need to have an elementary reaction. एक important concept आता है, that is called as elementary reaction. Elementary reaction. It's a very important concept. मतलब हर किसी रिएक्शन का molecularity हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. हर किसी रिएक्शन का molecularity हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें molecularity फाइंड आउट करना है, तो we have to have the elementary reaction. There are two types of reaction, elementary reaction and दूसरा complex reaction. Complex reaction. Okay, so what is this elementary reaction? What is this complex reaction? आप discuss करते हैं. This example is nothing but the complex reaction. This example is nothing but the complex reaction. When we talk about any of this reaction, it's called the elementary reaction. So देखिए कि क्या कहते हैं elementary reaction? Elementary reaction so simple. Elementary reaction is a reaction which completes in a single stage. The reaction which completes in a single stage is called as an elementary reaction. And the reaction which completes in two or more stages is called as a complex reaction. So we can say this is the reaction which occurs in two stages. And being it occurs in two stages, this must be called as a complex reaction. And this is called as an elementary reaction. This is called as another elementary reaction. So any of the complex reaction, you can break it down into the elementary reaction. But the reaction which occurs in a single step में होता है, उस reaction को हम लोग elementary reaction कहते हैं. और जो reaction 2 और 2 से ज्यादा stages में होता है, उसे हम लोग complex reaction ऐसा कहते हैं. ये important बात है. और इसके अंदर की खास बात है, as far as complex reaction is concerned, we can't calculate molecularity of the complex reaction. We can calculate the molecularity of elementary reaction. हम सिर्फ elementary reaction का molecularity calculate कर सकते हैं. Complex reaction का molecularity हम लोग नहीं निकाल सकते. समझ रहे हैं आप लोग? So in that sense, we have this reaction. There are two types of reaction: elementary reaction and complex reaction. What is elementary reaction? The reaction which completes in a single step. जो reaction single step में complete होता है, that is elementary, and we can calculate the molecularity of elementary reaction.
Complex reaction completes in a 2 or more stages, and we can't calculate molecularity of complex reaction. Complex reaction का molecularity हम लोग नहीं निकाल सकते. That happens with this complex reaction. Clear with this? So that is what we can say here. So this is the molecularity. So once again, just revise the topic. What we are seeing here is the molecularity. So molecularity is the number of molecules of all reactant taking part in a chemical reaction is called as a molecularity. So molecularity is number of molecules of all reactant taking part in a chemical reaction is called as a molecularity. We can have unimolecular reaction, we can have bimolecular reaction, we can have trimolecular reaction, we can have polymolecular reactions. Unimolecular, in which only one molecule is involved. Bimolecular, 2 molecules are involved. Trimolecular, 3 molecules are involved. 4 molecular, quadrimolecular reaction is there. More polymolecular reaction is there. So that's what we can say. हम किस reaction का molecularity निकाल सकते हैं? There are 2 types of reaction: elementary reaction and you can say complex reaction. Elementary reaction which proceeds or completes in a single state, and complex reaction is a reaction which completes in 2 or more stages, and that's called a complex reaction. Remember this? The thing is that elementary reaction which molecularity can be calculated. This is molecularity could not be calculated. Also, we are seeing points of difference between order of reaction and molecularity. Order of reaction is a purely experimental quantity, whereas molecularity is purely theoretical quantity. Order of reaction depends upon experimental conditions. Molecularity doesn't depend upon experimental conditions. So that is what we have. Order of reaction can be 0. Molecularity could not be 0. So that is what we have seen here in this chapter, here in this topic, that you can say molecularity. Yeah, with this topic, first section इस चैप्टर का कब होता है, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल और इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर 2-3 डेरिवेशन आएंगे, इसी का कनेक्शन से आएंगे, इसी टॉपिक का कनेक्शन है और कंटिन्यूएशन है. सो tomorrow we'll discuss core concept of the chapter chemical kinetics. Thank you very much. Till then, see you tomorrow. Thank you, sir. Yes, welcome.